हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है, तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, आज हम बात करते हैं स्टॉक टिप्स के बारे में। फर्स्ट स्टॉक है हमारा कोल इंडिया लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। ओके, लेट्स मूव। ओके, सो गाइस, कोल इंडिया शेयर प्राइस, स्टॉक एनालिसिस एंड रिकॉर्ड्स। करंट मार्केट प्राइस 230.30 विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹350। 350 का टारगेट है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। कोल इंडिया लिमिटेड। दिस इज द टेक्निकल चार्ट। कोल इंडिया लिमिटेड, सेक्टर माइनिंग, इंडस्ट्री माइनिंग, मिनरल्स। टेक्निकल चार्ट, कोल इंडिया लिमिटेड, इनसाइड्स, की मेट्रिक्स, रिटर्न्स, इंट्राडे फैक्ट चेक। In the last 12 years, only 0.52% trading season saw intraday declines higher than 5%. Okay, key metrics. Okay, PE ratio 4.85, EPS TTM 47.58. Market capital 1,42,174 crore. Sectoral market capital rank 1. PB ratio 3.24. Dividend yield 7.36. Face value 10. Beta 0.78. VWAP 230.28 and 52-week low high 263.40 and 164.65. Okay. Coal India returns 1 day, 1 week, 1 month, 3 month, 1 year, 3 years and 5 years. Okay. News. Coal India share news and analysis. Coal India share analyze. Recommendation, strong buy. Okay, financials. Quarterly, annual, December 2022. MD and A. Ratios, cash flow, balance sheets and income, profit and loss. Okay, employee and interest expenses. Company has spent less than 1% of its operating revenue towards interest expenses and 37.1% towards employee cost in the year ending 31st March 2022. Source, consolidated financials. Okay, total income 36,754.29. Total income growth plus 16.31. Total expenses 26,042.58. Total expenses growth plus 10.19. EBITDA 10,711.71. EBITDA growth plus 34.50. Profit after tax PAT 7,755.55. PAT growth plus 28.33. EBITDA margin 29.14. Net profit margin 21.10. basic EPS 12.58. Forecast. Okay, technicals. Technical chart, price analysis. Live market price 230.45. 45% positive movement since 1st Jan 2005 on intraday basis. 54% negative movement since 1st Jan 2005 on intraday basis. Pivot levels ATR, classic R1, R2, R3, S1, S2, S3. Pivot 230.25. Average true range ATR 5 days, 14 days and 28 days. Peer comparison. Technical chart.
Coal India Limited, NMDC, KIOCL, and Gujarat Mineral. Ratios performs. Stock returns versus Nifty 100. Stock gave a 3-year return of 59.78% as compared to Nifty 100, which gave a return of 85.23% as of last trading season. Okay, current market price 230.40. Live market price Coal India Limited. Shareholding pattern. Okay, total shareholdings. Okay, quarter on quarter change. Category 31st March 2023. Promoters 66.13. Pledge 0.00. FII 7.84. DII 20.89. Mutual funds 8.71. Others 5.14. Mutual fund ownership. Okay. Mutual fund ownership first, CPSC ETF growth, equity thematic PSU, amount invested 3,413.05 crore, 16.94% annual plus 6.42% change month to month basis. Okay, then second, HDFC Balance Advantage Direct Growth Hybrid Dynamic Asset Allocation, rating 4-star, amount invested 2,097.42 crore, 4.03% annual, 0.00 change month to month basis. Okay, then third, Parag Parikh Flexi Cap Direct Growth Equity Flexi Cap, rating 5-star, amount invested 1,462.64 crore, 4.67% annual, 0.00 change month to month basis. Okay, I found a quote. Corporate action. Coal India dividend. Others about Coal India Limited. Okay, so guys, Coal India Limited, incorporated in the year 1973, is a large cap company having a market capital of rupees 1,41,989.26 crore, operating in mining sector. एक mining company है ये. Coal India Limited key product revenue segment include other operating revenue and coal for the year ending 31st March 2022. Okay. Financials for the quarter ended 31st December 2022, the company has reported a consolidated total income of rupees 36,754.29 crore, up 16.31% from last quarter. Total income of rupees 31,599.24 crore and up 26.36% from last year same quarter. Total income of rupees 29,086.35 crore. Company has reported net profit after tax of rupees 7,633.28 crore in latest quarter. Okay. Okay, company has Ray and Ray as its auditors as on 31st March. Okay, as on 31st March 2023, the company has a total of 616.27 crore shares outstanding. Pramod Agarwal, Chairman. Pramod Agarwal, Chief Executive Officer. Sector mining, minerals. Location Coal Bhavan, premises number 4, Mar, Kolkata, West Bengal. 700156, India. Okay. ओके सो गाइस, कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है कोल इंडिया लिमिटेड. सेक्टर माइनिंग, इंडस्ट्री, मिनरल्स. करंट मार्केट प्राइस
230.50 लाइव मार्केट प्राइस विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹350। ओके सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार, बोलो राधे राधे।